सो मुझे मेरा प्रोजेक्ट भी करना था और मेरा सीनियर का प्रोजेक्ट भी मेरे पे आया था, दैट वाज वन ह्यूज प्रोजेक्ट एंड आई वाज जस्ट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोई बैरियर्स नहीं रखने थे एक एसोसिएट और एक टीम लीड के बीच में जो बैरियर्स रहते हैं, आई डिडंट वांट दैट बैरियर्स। गाइड करने का ज्यादा से ज्यादा आपका काम होता है बिकॉज यू नाउ हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री अराउंड यू, द पीपल अराउंड यू। Hi everyone, welcome to This is Imperative. दिस इज इम्पेरेटिव पे हम लाइफ के कई सारे डायमेंशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक है करियर, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद आवर गेस्ट पल्लवी भांगरे. So Pallavi Bhangre is from private sector. She is a team lead in Accenture. Even if you are not from private sector, I would highly recommend you to watch this video. इस वीडियो में हमने उनकी प्रोफेशनल जर्नी को डिस्कस किया है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ, कि उन्होंने किस किस तरह से कौन कौन से कदम उठाए टू रीच वेयर शी इज राइट नाउ. काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना तो अपने काम को बहुत मजे से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, बहुत खुशी खुशी करते हैं. उनके अंदर वो पैशन होता है कि वो अपने काम में पूरी तरीके से डूब जाते हैं. ऐसे लोग जो होते हैं किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पे हो, बहुत ही जल्दी सक्सेस उनको मिलती है, क्योंकि उन्होंने एएससी से जो टीम लीड का जो सफर है वो बहुत ही जल्दी तय किया है. हाय पल्लवी, वेलकम टू दिस इज इम्पेरेटिव एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए टू शेयर योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच रश्मि फॉर इनवाइटिंग मी. या इट फील्स रियली ग्रेट टू बी हियर. थैंक यू. सो आप बताओ कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही? हाँ चल रही है. इट्स वर्क फ्रॉम होम इवन नाउ, तो चल रहा है. बैलेंसिंग बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, सिटिंग एट होम, सो चल रहा है. गुड. प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है? नाइस क्वेश्चन. इट्स गुड, अ बिट हेक्टिक. वी ऑल नो दैट कॉन्स भी होते हैं वर्क फ्रॉम होम के, सो इट्स अ बिट हेक्टिक. You need to stretch a lot, at least 5 times a week. Saturday, Sunday, be you have to, some or the other case, you have to work. So it's a bit difficult, but I'm not saying that I'm not enjoying it. So it's fine with me. Of course, you are hard working और आपको काम वैसे भी ज्यादा पसंद है. If you can tell little bit about your title, what you're doing, आप किस कंपनी में हो, थोड़ा बहुत अपने प्रोफेशनल का थोड़ा सा समरी अगर आप दे देते हैं. हाँ, so I'm currently working as a team lead in Accenture Solutions Private Limited. So मेरा अभी का डोमेन इज इंश्योरेंस, स्पेसिफिकली कमर्शियल इंश्योरेंस में हूँ मैं. एंड I handle a team of 13 folks, all are Java resources. So I have been cross-trained a bit into Java currently. And yeah, that is pretty much it about my professional life. So I've been working as a team lead since past I would say 7 to 8 months. Yes. Great, so great. So now you are a team lead. Yeah. Congratulations. Thank you. ओके, सो मैं थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ कि इसमें 2 पार्ट रहेंगे. फर्स्ट पार्ट में इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस फ्रॉम स्कूल टू टिल नाउ किस तरह से रहा है. सेकेंड पार्ट में वी विल मोर टॉक अबाउट टेक्निकल एस्पेक्ट, जिसमें यू कैन गाइड पीपल कि अगर उन्हें आपकी प्रोफेशन में जाना होगा तो वो किस तरह का काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So if you can tell me कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? What kind of student you were in school time? Okay, I'm a bit embarrassed to say, but I was a very very studious student. Why embarrassed? Because nowadays like क्या, ये तो bookworm थी, पढ़ाकू थी, तो ये तो सबसे अच्छी बात होती है. मतलब आई पेरेंट्स थिंक दोनों चीज होती है अच्छी, कि आप थोड़े मस्ती खोर भी हो स्कूल में, लेकिन अगर आप पढ़ाकू हो और आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो ये तो बेस्ट पार्ट है. हाँ, so yeah, I was very studious. आई थिंक लाइफ में आपको हर चीज काम आती है, पर आई थिंक पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा काम आती है. तो पढ़ाई एक नॉच थोड़ा ऊपर ज्यादा है उसका. You can carry on with what kind of student you were in your school. So I was a very studious student, very dedicated. My parents used to tell me कि हाँ ठीक है अभी थोड़ा break ले. I was that level of studious. Seriously. So my school life was pretty good.
not that I was like only bookworm. I was into co-curricular activities as well. I used to participate in each and every gathering, the annual functions which we used to have. I used to participate in dance competitions, recitations. I used to go on what do you say, inter school competitions. I was involved in chess, everything. So yeah, I was a bookworm. I used to study a lot, but I also used to take some time out to get into the co-curricular activities as well. I was not that good at sports, but apart from that, yeah, I was a very studious student when it came to school life. Uh, my not that what do you say, mischievous kind of person. मतलब जैसे कंप्लेन वम्प्लेन कभी आई नहीं थी घर से, घर पे की ये मस्ती कर रही है, वो मस्ती कर रही है, तो आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट, शांत. दैट वाज अंटिल माय 9th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में जब लोग सीरियस होते हैं, मैं थोड़ा मस्तीखोर हो गई थी, because और I was in a lot of pressure, so I wanted to ooze out that pressure, and थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आई यूज्ड टू मेक फन एंड थोड़ा एंजॉय करती थी, ताकि वो पढ़ाई का थोड़ा वो बोर्ड का जो प्रेशर रहता था, थोड़ा वो ईज आउट हो जाए. सो 10th में मैं थोड़ा एक्चुअली रिलैक्स हो गई थी, बट अंटिल 9th आई वाज लाइक पूरा फोकस, बस ऐसा था मेरा. इट वाज क्वाइट ग्रेट. ऑपोजिट इन 10th. तो उसके इसके बाद क्या हुआ, लाइक 10th 11th 12th की क्या प्लानिंग की थी आपने, मतलब 11th 12th में क्या प्लानिंग की कि 12th के बाद क्या करना है, और कॉलेज की ब्रांच की क्या प्लानिंग की कि किस ब्रांच में जाके आपको हायर स्टडीज करनी है. सो एज यू सेड कि आपने 10th में थोड़ा बहुत ईज आउट किया था, लेकिन स्टिल पीपल हैव इन माइंड कि 11th 12th में क्या लेना है, मैथ्स लेना है, राइट, किस स्ट्रीम में राइट. जाना है, एंड देन 11th एंड 12th में होता है कि व्हाट फर्दर, आपको किस तरह की पढ़ाई करनी. कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लाइक उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा था कि जस्ट टू बीटेक, मतलब वही कर लो. लेकिन यस, स्टिल कुछ लोगों का माइंड क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है. सो आप किस राइट. कैटेगरी में थे और आपने क्या प्लान किया था मैं अपने फ्यूचर के लिए? मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर आउट ही था. इन स्कूल मुझे तो डॉक्टर बनना था. आई वांटेड कि नहीं यार, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी. फिर मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ, आई स्कोर्ड गुड, गॉट इनटू मैथ्स एंड साइंस, दैट इज पीसीएमबी. आई टुक बोथ. मतलब दोनों जगह पे ट्राई करना है, मैथ्स के लेवल पे भी जाना है, बायो के लेवल पे भी जाना है. आई यूज्ड टू लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, सो आई वाज ओके विद एनीथिंग. But then my inclination was more towards getting into engineering, and specifically environmental engineer. मेरे को environmental engineer बनना था. मतलब I was very inclined towards like nature and उसके around अगर मैं कुछ पढ़ सकूँ तो. And that was from my school days itself. ऐसा कभी ट्री प्लांटेशन हो, कुछ हो, ऐसा कुछ फंक्शंस हो, आई यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड. तो ऐसा था कि नहीं, 10th के बाद तो 11th 12th में फिक्स्ड है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाना है, तो वैसे पढ़ाई करो. मेरा 12th हो गया. आई स्कोर्ड वेल इन 12th एंड देन रेस स्टार्ट हो गई. आई वाज लाइक नहीं, मेडिकल में तो नहीं जाना है. आउट ऑफ स्कोप लगा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक ना मैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट काइंड. मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, अभी मैं एम्बीवर्ट हो गई थी. तो मुझे ना मेडिकल, मुझे नहीं लगता था कि फ्रैंकली स्पीकिंग मेडिकल के लिए मैं इतना डेडिकेशन दे सकती थी. माई इंक्लिनेशन वॉज मोर इनटू मैथ्स. मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था इन 11th 12th. बी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ऑल दोस थिंग्स, आई यूज्ड टू लाइक इट अ लॉट. तो आई थॉट कि इंजीनियरिंग को जाएंगे बट एनवायरमेंटल करेंगे. I wanted to get into environmental engineering, but there were very few colleges for it, and I did not score well in IIT entrance, so couldn't get into. IIT does have it, it seems, but I couldn't crack it. So, and the one which I was getting, it was very far away, so reserved थोड़ा सा सब कुछ. तो I dropped that plan and I got admission in a good college. I got into Somaya and got electronics and telecom engineering. So I thought of giving it a chance, and I went ahead and got my bachelor's of engineering in electronics and telecom engineering from Mumbai University, Somaya College. वाओ, सो ग्रेट. तो आपने ड्रॉप लिया था स्कूल के बाद? नहीं, तो I did not. डायरेक्ट था. देन हाँ. अगर थोड़ा बहुत अगर आप कॉलेज लाइफ को बताएं कि किस तरह से अपने कॉलेज लाइफ को हैंडल किया था, यू वर मोर इनटू स्टडी या फिर सब चीजें अपने
आपने किया लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एंड अदर थिंग, यू जॉइन, यू पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो, या किस तरह से आपने अपने कॉलेज लाइफ को हैंडल किया था, कीपिंग इन द माइंड कि इसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने वाली? राइट। मेरा माय अब तक के मेरे लाइफ के जो 4 years थे, दोज वर द मोस्ट अमेजिंग, दोज वर द बेस्ट years of my life, I would say. I enjoyed my college life thoroughly. I was not only into studies but also in all co-curricular activities. I was into all the annual festivals. I was a creative head as well for a committee, IETE committee, which was there in our college. So we used to organize fests. I was also in the marketing committee wherein we went to various different colleges to get sponsorship, to get participants, to participate in our college fests. And also I was very active. I also, in my initial years, in first and second year, I also participated in dance competitions and all. So I was not like sort bookworm kind of a person when it came to my engineering life. I enjoyed thoroughly every aspect of those, what do you say, professional study. So फर्स्ट सेमिस्टर तो बहुत डिफिकल्ट था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे फर्स्ट सेमिस्टर में केटी लगा था। आई वाज लाइक कि अचानक से ये मैं क्या पढ़ना स्टार्ट की हूँ। इट वाज वेरी, और वो केटी भी मुझे केमिस्ट्री में ही लगा था। आई वाज, मेरा बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे थे बट आई वाज वेरी बैड इन केमिस्ट्री राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज। आई ऑलवेज यूज्ड टू स्कोर लेस इन केमिस्ट्री, बी इट इन स्कूल, बी इट इन हायर सेकेंडरी एंड इंजीनियरिंग में तो फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में केटी लगा। इट वाज ऑलवेज बैड इन केम। So I anyhow dragged my chemistry somehow, and that was it. That was my only hurdle. And post then it was all good. Since second semester, it all went well. And then I gradually got into the whole mode, and it was all very smooth once you get into the mode of that professional studies. So it becomes quite easy. सो यू So it थिंक कि was wonderful. आपका करिकुलर में आपने पार्ट लिया तो इट हेल्प यू इन बिल्डिंग योर पर्सनालिटी? Definitely, definitely. I think that was the only thing I would say. I won't give more credit to my studies, but to my co-curricular activities that I have been like able to present myself. I have present myself in a good way. I think मेरा presentation skills बोलो, थोड़ा management skills बोलो, uh, how to tackle any situation, how to keep your calm, when to react, when not to react. All these things, I think I learned because of getting into the co-curricular mode and not only sticking to studies, I would say. So when ज़्यादा open up होना start हुई, I was very introvert. If you talk to any of my school friends, they'll definitely say कि पहले की पल्लवी और अभी के पल्लवी में बहुत difference है. That is because I wanted to get rid of that barrier कि मुझे थोड़ा वो मुझे ऐसा सिर्फ बुक्स में नहीं रहना था. I wanted to explore more, and that is why everything apart from my studies helped me a lot to improve my personality to what I am today. सो एक लास्ट इसी पे रखते हैं। लेट्स से कि आप अगर डिफरेंस करें, मतलब कि आप स्कूल में जिस तरह से थे और देन कॉलेज से निकल के या फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में मान लो कि, तो दोनों में क्या डिफरेंस था ऐसा कि जो लोगों को सीखना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए इन कॉलेज या कभी भी इन स्कूल? That if you can tell me a little bit of the difference between you in your personality, कि आपने let's say you have done everything in your college, आपने बहुत सारी चीजों में पार्ट लिया, बहुत सारी चीजें की अपार्ट फ्रॉम स्टडी। आप तो वो तो आप शुरू से कर रहे थे कि हैव योर माइंड कि हाँ पढ़ना तो है ही, पर अब कुछ और भी करना है, लाइक यू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट थिंग। अब क्रिएटिव साइड में भी आपने बहुत काम किया और सारी चीजों में जिसमें आपको मौका मिला आपने किया। तो इसमें जैसे आपने कहा कि इससे फर्क पड़ा, कोई भी अगर आपसे मिलता तो कहता कि यू आर नॉट द सेम। तो अगर आप थोड़ा सा और डिफिनेट होके बोल दें इन एक्सप्लिसिट फॉर्म कि क्या फर्क पड़ा था, लाइक अगर आप स्कूल की पल्लवी एंड देन अभी की पल्लवी, अभी इन द सेंस कॉलेज की पल्लवी, कॉलेज की लास्ट ईयर जब आप प्लेसमेंट में जा रहे थे, तो क्या डिफरेंस था उसमें, क्या क्या आपने सीख लिया था? ह्यूज डिफरेंस था. आई वुड से स्कूल लाइफ में मैं बहुत रिजर्व थी. आई यूज टू टॉक लेस.
I used to communicate less. I was more into my studies. I had very less friends, I would say. Uh, hang out करना, बाहर जाना, लोगों से interact करना, that is something which was not uh, which was not in me at all. So मेरे लिए वो थोड़ा difficult होता था. पढ़ाई के मामले में I was good, but वो एक चीज रहती है ना कि when you talk to someone आपका एक vibe reflect होता है. All those things I think I didn't have in me in the initial days, that is in my school days. But जैसे जैसे I started to loosen up a bit, मेरा वो रिजर्वनेस थोड़ा मेरे से थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे उसके रेपरकशंस दिख रहे थे. आई यूज्ड टू फील बैड कि आई डिडंट गो आउट विथ माय फ्रेंड्स, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं सिर्फ घर पे बैठी हूँ, मुझे वो थोड़ा लगता था. सो आई ट्राइड टू ओपन अप अ बिट, एंड that journey started from my 10th standard, frankly speaking. Up until ninth I was very different person, and 10th में मैं बहुत different थी. So 10th से मैं थोड़ा loosen up करना start हुई, थोड़ा मेरा friend circle बढ़ा. I used to uh, go out with my friends a lot. That doesn't mean कि बस time pass करते थे या घूमते थे. बीट सेमिनार्स या ऐसा कुछ रहता था तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करना या जाना स्टार्ट कर दी थी. तो थोड़ा इंटरेक्शन जैसे जैसे आपका बढ़ता है, आपका पर्सनालिटी थोड़ा चेंज होता है. आई डोंट थिंक किसी एक इंसान का एक पर्सनालिटी होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग. आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को जेलअप कर लेते हो किसी भी एनवायरनमेंट में. अगर आप बड़ों के साथ होते हो आपका एक अलग पर्सनालिटी होता है, फ्रेंड्स के True, साथ एक true. अलग पर्सनालिटी होता है. सो मैं थोड़ा लूजन अप करना जैसे जैसे स्टार्ट की थी. आई improved my interaction skills, it improved my communication skills, it improved my confidence, and that is something which I carried with me up until my placement days. And I think frankly speaking मेरा जब I still remember मेरा interview Accenture के लिए था. uh, I was there was a panel of three folks and we were five people. I was the only person who was from telecom, and rest of the four people were IT computer science. So IT company के लिए वो लोग तो थे ही थे, but still they took a chance with me, I would say, because frankly speaking मेरा interview was not on the basis of coding, क्योंकि टेलीकॉम की बंदी भाई मेरे को तो आईटी और कंप्यूटर साइंस का तो कुछ भी नहीं पता था. But I think my confidence reflected, and that is why I remember one of the panelists did say that it is just because of your confidence we are taking a chance with you करके. So that was I think that is where I reached from the timid Pallavi to, I am not saying that ekdam opened up, but something which is like uh, what can I say, something which is जो मुझे थोड़ा ओपन अप करके मैं थोड़ा जेलअप होना स्टार्ट की. एंड थोड़ा मुझे वो पॉजिटिविटी मुझे खुद में पॉजिटिविटी थोड़ा लगा. सो आई थिंक दैट वाज अ गुड चेंज इन मी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. Let's talk about your job in Accenture. So, what was the feeling of getting your first job, and then how you proceeded it further? Both with same zeal and enthusiasm कि पूरा focus job पे, या फिर अभी भी you were like कि नहीं दूसरी चीजें भी try करनी? आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि मतलब वो एक रहता है ना माइंडसेट कि भाई कॉलेज से निकलते ही प्लेसमेंट मिल रही है, मतलब कॉलेज से निकलते ही आपके हाथ में जॉब है, वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है. तो मेरा वैसा ही फीलिंग था. वाज वेरी हैप्पी, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू गो थ्रू दैट विक्रोली रोड. आई स्टिल रिमेम्बर दैट थ्रू बस. एंड मेरे पापा को मैं हमेशा बोलती थी मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी, ऑलवेज. एंड आई फाइनली वाज देयर. So I was very happy. It was a small achievement for me, I would say, but I was very happy with that achievement. My dad even said कि तू बोलती थी ना यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, अभी तू है It यहाँ was पे. your So I was very manifestation. happy. I don't know, but yeah, I was very happy It with was your ये manifestation ही हुआ. It worked for you. yeah. So it was a good feeling. My parents were very happy, and I think I was very fortunate that I got good leads right from the start, right from my training days. My professors were very good in Accenture as well. And then I got into a project, which is the same project we both were in.
So my leads were good. I got a good management as well. So it was a very, very good journey for me, frankly speaking. ओके, सो ग्रेट कि आपको मजा आ रहा था काम करने में और आपको बहुत ही अच्छा लगा. इट्स रियली रेयर उस टाइम पे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ज्यादातर उस टाइम स्टार्टअप पे था. क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि 2015 में आपकी जॉब लगी थी, एंड द स्टार्टअप एरा स्टार्टेड फ्रॉम 2014 2013. थोड़ा बहुत स्टार्ट होना शुरू हो गया था. 2015 पे तो बहुत ही ज्यादा था, एंड 2016 पे. सो तो उस एरा में व्हाई डिडंट यू चूज कि एमएनसी, क्योंकि मुंबई में, यू लिव इन मुंबई, तो उस एरिया में तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं उस. Right. I actually thought of it, but uh, touch wood. I mean, I don't know why, but people do tell me that why didn't you prefer a startup? थोड़ा और सीखने मिलता. But the team I got into, the project I got into, the leads, the management I got received. I mean, I think it was a perfect start for my career. ऐसा नहीं था कि एमएनसी में है तो इतना सीखने नहीं मिलेगा. आई थिंक मुझे मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सीखने मिला. Because we were a small team. We were a team of what 2 to 3 folks. So काम बहुत था. और मेरे ऊपर सारे एक्सपीरियंस लोग थे. आई वॉज दी ओनली एसोसिएट. मेरे ऊपर तो सारे सीनियर्स, अच्छे अच्छे सीनियर्स थे सारे. So I got to learn a lot in my project. So I think when you say MNC and startup, end of the day it depends आपका प्रोजेक्ट कैसा है. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप एमएनसी में काम करो, स्टार्टअप में काम करो. It doesn't matter until and unless you get to learn stuff. And I got to learn it with a good package. Then why not continue? That was my main, I mean, Yeah, understanding of it. Yeah. So it was a good. I think frankly speaking, I was blessed to get into a good firm and a good project. So that is why I thought of continuing. एज यू सेड पल्लवी, इट्स रियली ट्रू कि डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम मिल रहा है, आपको काम क्या मिल रहा है, आप सीख क्या रहे हो, इस पे बहुत डिपेंड करता है. एंड इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ लक. इवन इफ यू गो फॉर स्टार्टअप, मे बी दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर टू ग्रो योर सेल्फ एज अ पर्सन इन टेक्निकल फील्ड. सो आई थिंक whatever you said is very true कि it doesn't matter you are in MNC or in startup, it depend on your on what kind of work you are doing. And Yes. I'm sure you must be doing great work. That is why you grew so fast in your field. Touch wood. Seriously, I mean, I don't want to say. I'm not saying in the term of position. I'm saying in the term of knowledge. I think it can be seen in your talking that you have knowledge. You know what you're talking about. मतलब आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो. Process like from associate to tech team lead. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर आप थोड़ी देर में बता दो, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट. It was amazing. I think roller coaster ride था. पता ही नहीं चला कि कब टीम लीड बन गए. But my definition is very different. I would say. I mean, मुझे कोई बैरियर्स नहीं रखने थे. एक एसोसिएट और एक टीम लीड के बीच में जो बैरियर्स रहते हैं, आई डिडंट वांट दैट बैरियर्स. सो आई ऑलवेज डिसाइडेड कि जब भी मैं वो पोजीशन पे जाऊंगी, आई ट्राई टू बी अ गुड लीडर टू माय टीम. एंड मतलब एक जो मुझे, आई वाज सो फॉर्चुनेट इनफ टू गेट गुड लीड्स. I wanted to be that same person. So that was my main aim, and my journey was very, very good. I got to work on very good projects, very good experiences I had. My client interaction, my leads always encouraged me to have good client interactions. So that is where my confidence boosted up. So my journey was very beautiful, very nice. I enjoyed it thoroughly, be it work pressures, be it working late hours, staying back in offices, getting on weekends for the releases, each and every aspect of it. I enjoyed it a lot, right from being an associate to being a team lead, I would say. So it was a very good and wholesome experience. Wow, that's beautiful. Okay, so let's move environmental engineering, and I don't think so कि बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में. Even मुझे भी ज़्यादा नहीं पता. If you can throw a little bit of light कि what is environmental engineering? मतलब उसके अंदर किस तरह का काम आता है? बेसिकली मैंने स्टडीज के लिए देखा था.
it is more about right from the मतलब जैसे जैसे pollutions का कैसे type के होते हैं, कैसे होता है, lands का कैसे होता है, कौन से barren lands होते हैं, how to study that and all those things. So वो सारी चीजें, the hardware part of it, ये सारी चीजें comes into environment. मुझे अभी इतना याद नहीं है, but that is something I researched at that time, which had that is the reason I had more inclination towards it. So that was my main reason to get into this. So I always wanted to give back to nature in some or the other way. So अभी भी कोई ड्राइव्स वाइव्स होते हैं, ऐसे क्लीन अप ड्राइव्स वगैरह निकलते हैं ना, तो आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन देम एज मच कि भाई चलो एनवायरमेंटल इंजीनियर नहीं बने तो कुछ तो करे. तो दैट इज तो वैसा है. बट या इट वाज मोर ऑन दैट पार्ट. ओके आई डोंट रिमेम्बर माय रिसर्च. आई हैड डन अ लॉट बट अभी इतना याद नहीं आ रहा मुझे. ओके ओके, नो नो इशू. और किस तरह का काम आपने किया था अपने फर्स्ट जॉब पे? लाइक यू सेड यू वर एसोसिएट, तो इफ यू कैन टेल मी मोर कि किस तरह का काम था और आपने क्या किया था. और As an associate, I got into an insurance domain project. And I have been in insurance domain actually right from the start. Uh, Starting में I was into PNC, property and casualty insurance. So उस industry का थोड़ा knowledge लिया. Being an associate, frankly speaking, it is like perks of being into MNC. I would say initial days में इतना काम नहीं मिलता है. It is more about taking trainings, learning what exactly your domain is, and few incidents. Frankly speaking, I started with incidents थोड़ा सा starting में. My team lead was very good, so she used to, मुझे कुछ आता नहीं था तो मैं उनको लेके बैठती थी कि मुझे बताओ ये कैसे करना है, and she used to get done half of my work. So initial days was more of getting to know the environment you're working in. Environment as in not your physical environment, the project which you're working in, how client interactions happen, what exactly that domain mean, uh, routing through the code. जो ट्रेनिंग में हमें जो कोडिंग सिखाई जाती है और जो एक्चुअल प्रोजेक्ट में जाके जो हम कोडिंग करते हैं उसमें वास्ट डिफरेंस है, वेरी वेरी वास्ट डिफरेंस. हर एक प्रोजेक्ट का अपना अपना एक वे होता है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स अपने अपने अलग अलग होते हैं. सो वो सारा आपको एसोसिएट लेवल से ही सिखाना स्टार्ट कर देता है, हाउ टू राउट थ्रू द कोड एंड ऑल दो स्टफ. So those were mostly my initial days. Mostly I used to work on ad hoc requests जो भी दूसरे टीम से आते थे, simple analysis tickets. I started with that and testing. So जो एक यूनिट टेस्टिंग रहती है, when a developer develops the code, he unit tests it. So वो यूनिट टेस्टिंग का पार्ट मेरे पास आता था. My seniors used to develop the code and I used to test it. So मेरा mostly स्टार्टिंग का frankly speaking मेरा एसोसिएट का ईयर went into incidents and testing only. एसोसिएट के एंडिंग में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफेक्ट्स. सो मेरा एनहांसमेंट प्रोजेक्ट था. सो इट वाज इंक्लूडिंग बोथ डिफेक्ट्स एंड योर एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स which used to come in. So then I started getting into defects, that is problem tickets which we call. And then my SC level पे जब मैं आई, that is when I got my the biggest project of my life, which I still remember. It was one heck of a project, and that was the time wherein I was a software engineer, and वो इतना बड़ा project था, and it was divided between me and my senior. And my senior had to go on a leave for around I think 2 months. So मुझे मेरा project भी करना था और मेरा senior का project भी मेरे पे आया था. And that was one huge project, and I was just a software engineer. And I was so tensed कि भाई ये कैसे होगा मेरे से. I was that level of tensed. But then my management, frankly speaking, helped me a lot with this. Even the team leads used to sit with me to help me out whenever I was stuck. I extended my day, working hours a lot. I used to sometimes come on Saturdays as well just to get that extra piece of work done. So SC लेवल पे एंड तब मेरे प्रोजेक्ट पे अजाइल मेथोडोलॉजी न्यूली आया था. अप अंटिल देन इट वाज ऑल वाटरफॉल, फिर अजाइल आ गया. तो अजाइल में जो काम करने का प्रेशर रहता है दैट इज डिफरेंट. यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन टो व्हेन इट कम्स टू getting the sprints done, getting the epics done. तो वो एक एडेड प्रेशर था. सो दैट वाज वन हेक ऑफ अ राइड फॉर मी. Me, my team lead, my manager still remembers that journey. So
Yeah, so my SE days were very hectic, I would say. Then एक next level आता है and you kind of get into the mode of doing the work. फिर कोई pressure ही नहीं रहता. कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, एक बार आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग किसी में कोई प्रेशर नहीं रहता उसके बाद. कितना भी डिफिकल्ट चेंजेस आए, कितना भी टेंस सिचुएशन हो, यू लर्न टू कीप योर काम. फिर तो ऐसा लगता है नहीं, ये हो जाएगा, कर लेंगे, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस आता है एंड विथ एक्सपीरियंस यू नो हाउ दिस सिचुएशन कैन बी टैकल. वो थोड़ा एक आइडिया आपको ना आपके एक्सपीरियंस के साथ आता है, आ ही जाता है. इनिशियल डेज में थोड़ा नर्वसनेस रहती है, बट बाद में एवरीथिंग सूट्स आउट एज पर माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस. And yeah, it was good. I was into mainframe technology. My uh, language was COBOL. So being an electronics and telecom engineer, हमारे लिए तो कोडिंग दूर की बात थी, बट आईटी और आईटी वालों को जब हमने पूछा कि व्हाट इज कोबॉल, इवन दे टोल्ड दैट नो, वी डोंट नो मच अबाउट इट. एंड दैट वाज वेयर आई पैनिक्ड अ लॉट. आई लाइक अभी अभी कहा एक्सेंचर ज्वाइन किया है और उसमें पता नहीं कहाँ ये मेन फ्रेम में डाल दिया. नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट मेन फ्रेम. बस इतना पता था सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, दैट्स इट. इतना ही डेफिनेशन गूगल किया था सबने कि सुपर कंप्यूटर्स है. सो तब मैं थोड़ा टेंस थी, बट my professor was very good, who taught COBOL from scratch. So he was very good. And that is where I learned that language and continued in this technology. So it was a very good experience. I learned a lot throughout my journey. तो अभी आपने कहा मेन फ्रेम, लाइक कि मेन फ्रेम के बारे में ज्यादा कोई लोग कुछ जानते नहीं है. एंड कितने कितने टाइम तक आपने मेन फ्रेम पे फिर काम किया उसके बाद? I would say 6 years मेरा मेन फ्रेम में था. मेरा मेन फ्रेम अभी अभी छूटा है. I feel bad about it. I wanted to stick to it. Frankly speaking, people complain कि mainframe में है, COBOL पे है, but I like my technology a lot. But अभी अभी मेरा mainframe छूटा है. So, but I worked for around 5.5 to 6 years in this technology. तो अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें कि एक्चुअल में मेन फ्रेम क्या है. एज यू सेड कि पीपल थिंक इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग और उतना लोगों को पता नहीं है, तो व्हाट इज द रीजन कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और व्हाट इज द प्लस पॉइंट इन मेन? So basically, आपका जो भी ह्यूज डेटा होता है, ह्यूज डेटाबेस होते हैं जहाँ पे आपके समथिंग, रिटेल सेक्टर पकड़ो, आप इंश्योरेंस डोमेन पकड़ो, बैंकिंग डोमेन पकड़ो, जहाँ पे ह्यूज कस्टमर डेटाबेस होता है, उतना ह्यूज कस्टमर डेटाबेस हैंडल करने के लिए यू नीड मेन फ्रेम. आप अगर किसी भी बड़े फर्म्स में जाइए, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 60 to 70% ऑफ इट इज ऑन मेन फ्रेम इवन नाउ. सो ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ये रिडंडेंट टेक्नोलॉजी है एंड ऑल दो स्टफ. नो, दैट इज नॉट ट्रू. इट इज स्टिल इन डिमांड. एंड अभी ऐसा है कि रिसोर्सेस कम है, तो एक्चुअल में रिसोर्सेस, द करंट रिसोर्सेस आर इन डिमांड. सो it basically deals with huge, it is a very secure, reliable, scalable technology. तो जितना सिक्योर मेन फ्रेम है, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस आर इट. दैट इज द रीजन बिग 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 फर्म्स आर स्टिल अ बिट स्केप्टिकल टू गो अवे फ्रॉम ZOS प्लेटफॉर्म. आई वुड से ZOS लिनक्स प्लेटफॉर्म को अभी भी लोग प्रेफर करते हैं instead of going into some other, I know cloud is getting in, but that is different aspect of it. But still, What is this it is ZOS? still, it is a platform. Your टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म होता है, दैट इज योर ZOS प्लेटफॉर्म. Okay. So it is still in demand. That is your operating system basically. Okay, So it okay, is still okay. in demand. Yeah. So all big firms, उनका सबका जो बैकएंड रहता है, बैंकिंग फर्म हो, इंश्योरेंस फर्म हो, रिटेलिंग फर्म हो, कोई भी हो, सबका बैकएंड मेन फ्रेम ही है अभी भी. एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सूनर. सो या, ओके. रीजन कि इसको बहुत कम यूज किया जाता है मेन फ्रेम्स? आई वुड नॉट से कम यूज किया जाता है. इट्स जस्ट दैट द सर्वर्स आर एक्सपेंसिव. इसलिए अब अगर आप देखोगे स्टार्टअप्स वगैरह, ओके, तो आई इतना कैन से मेन फ्रेम. कि ये इतना पॉपुलर क्यों है फिर, क्यों नहीं है फिर, मतलब सो रीजन कि पॉपुलर क्यों नहीं है, और इट इज इसका कम यूज? एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव. हाँ, इट इज एक्सपेंसिव है. इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी है. सो नॉट एवरी फर्म
would be able to like get into a mainframe, I would say. रिलायबल सिस्टम है बट कॉस्टली भी है उतना, तो इसीलिए जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं दे कैन अफोर्ड इट्स मेंटेनेंस, उसका सॉफ्टवेयर का जो भी लाइसेंसिंग रहता है, जो कुछ भी रहता है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, उनके सर्वर्स वो ले सकते हैं. सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट इन every other firm, but it is in big firms. It is used in big firms because it is cost effective. That is why. तो मेन फ्रेम को किस टेक्नोलॉजी से हम इक्वेट कर सकते हैं? I don't think जो कुछ, I think I am not completely sure about it, but I still think कि cloud platforms आ रहे हैं. So I'm not sure if it is going to be the complete replacement for mainframe. That is this technology. Not completely sure about it, but yeah, people do talk about it. That Okay. GCP या कोई भी platforms हो, cloud platforms, those can be used as a replacement for it, but not completely effective yet. Other languages, see, आपका apps वगैरह बनाना होता है, that is something which can be done through rest of the languages. आपका कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, .NET हो, ऑल दोस, यू क्रिएट एप्स विद इट. आपको अगर ह्यूज डेटाबेस संभालना है, किसी कस्टमर्स का हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए इट इज the companies are going to prefer mainframe because it is capable of doing that. Okay. So I fit है. तो आपने कहा कि आप इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था आपका डोमेन इंश्योरेंस का था, तो अगर आप थोड़ा बहुत बताएं कि इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट में क्या होता है, अगर किसी को इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट मिलता है या उसके लेट्स से किसी को कोडिंग में नहीं किसी इंश्योरेंस की ही जॉब मिल गई, तो उसे किस तरह का काम मिलेगा उसमें, लाइक इंश्योरेंस या बैंकिंग एफआईसी की किस तरह का काम उसको मिल सकता है और वो एक्सपेक्ट क्या कर सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर? ओके, सो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था दैट वाज ऑन प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, एंड सेकंड जो है अभी करंटली दैट इज कमर्शियल इंश्योरेंस. सो बेसिकली आर डीलिंग इज विथ यूएस मार्केट, तो मैं उसका थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ बिकॉज माई क्लाइंट, बोथ द क्लाइंट्स आर यूएस क्लाइंट्स, तो मुझे वो मार्केट का थोड़ा सा आइडिया है. ओके, सो आपका अगर इंश्योरेंस, बेसिकली यू गेट टू नो, यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इंश्योरेंस मीन, उसका डेफिनेशन क्या है. बेसिकली यू आर इंश्योरिंग समथिंग विच यू पजेस. अगर अगर आपका प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी है, तो अगर आपका कोई घर है, तो आप इसको इंश्योर कैसे करेंगे, घर के हर एक चीज को आप कैसे इंश्योर करेंगे. यू कैन इंश्योर राइट फ्रॉम योर स्प्रिंकलर टू योर वॉल्स, एवरीथिंग, वो सब दैट ऑल कम्स इनटू इंश्योरेंस. सो दैट इज योर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. बेसिकली अगर आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया है, तो वो भी एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है. सो ऑल दीज इंश्योरेंस के एस्पेक्ट्स होते हैं विच यू गेट टू लर्न. ये हो गया आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. फिर ऑटो इंश्योरेंस होता है. अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, व्हाट कवरेजेस आर यू गेटिंग. अगर आपने सामने वाले का अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो सामने वाले का भी जो भी क्लेम होता है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू पे एज वेल. उसका भी कवरेज आपको इंश्योरेंस फॉर्म देती है. सो दोज आर, आपका ऑटो मेंटेनेंस का क्या इंश्योरेंस होता है, उसमें ये सारे डिसाइड करने के भी बहुत फैक्टर्स होते हैं. आपका ऑटो कहाँ मैक्सिमम चलता है, कितना मैक्सिमम चलता है, ये सारे एस्पेक्ट डिसाइड होते हैं कि एक कस्टमर का रिस्क फैक्टर कितना है. बेसिकली इंश्योरेंस में आपका रिस्क फैक्टर बहुत मैटर करता है. आप जितना ज्यादा रिस्की हो, उतना ज्यादा आपका प्रीमियम आएगा. प्रीमियम मतलब आप कितना अमाउंट भरते हो. आपका जो मंथली प्रीमियम होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, वो सारे प्रीमियम्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. दैट इज ऑल बेसिकली one kind of insurance dedicated to a person, to his property or to his family. एक होता, there are multiple types of insurances, I would say. उसमें से one of it is this. Other is commercial insurance. आपकी अगर फर्म को इंश्योर करना है, कमर्शियल मतलब एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे जाके आपका इंश्योरेंस होता है. कमर्शियल मतलब कौन सा, अगर आपकी फर्म है, कोई भी फर्म्स होती है, बीट एनी फर्म्स, जैसे कि कोई रिटेलिंग फर्म है या जहाँ पे एम्प्लॉयज बेसिकली काम करते हैं, सो दैट इज ऑल योर कमर्शियल इंश्योरेंस. तो उसमें ऑल दी वेजेस एंड ऑल, जो भी आती है, जो भी लाइबिलिटीज होती है एंड ऑल, दोज ऑल कम इनटू कमर्शियल इंश्योरेंस. उसमें भी काफी डेफिनेशंस है.
सो बेसिकली वंस आपको मिलता है, आपको इंश्योरेंस डोमेन मिलता है, जस्ट गेट टू नो द व्हाट इंश्योरेंस मीन, और उसके कौन से टाइप्स होते हैं, अगर आपको वो पता चले देन इट इज वेरी गुड। आप एक टाइप के प्रोजेक्ट में जाते हो उसमें, देन यू कैन स्विच इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट। एक डोमेन में जाके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो विथ मल्टीपल डायरेक्शन। सो just get to know the gist of what exactly that particular domain is. I think that is self sufficient. जैसे जैसे आप काम करते हो, you get to learn new things functionally as well. किसी भी प्रोजेक्ट को आप किस तरह से हैंडल करते थे? इफ यू कैन एक्सप्लेन योर रिचुअल्स. Okay. So ideally requirements used to come to us. So what I learned is, don't directly go into the technical aspect of any requirement which comes in. That is the process which I followed and it helped me a lot. So I just wanted to share that with the rest of the folks. So whenever you get any kind of requirement, go through it and understand that requirement as a customer. कि अगर मैं ये सारी चीजें अगर मैं लेती हूँ तो ये मुझे कैसा एक्सपीरियंस देना चाहिए. सो अगर सपोज आई वर्कड ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, आई यूज्ड टू गेट गो ऑन माय व्हाट डू यू से वेबसाइट. जो मेरा प्रोजेक्ट था उनके वेबसाइट पे जाके जो भी फर्म अगर कोई नया प्रोडक्ट ला रहा है, लॉन्च कर रहा है ना, आपको उसके वेबसाइट पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. उनके वीडियोस बनते हैं. आप एक डेवलपर बैकएंड में कोडिंग करते हो बट उनका मार्केटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है to gather the to get customer attraction. So that is very helpful, I would say. Before starting your development, go through their website, देखो कि उनके एक कस्टमर बेनिफिट्स क्या है. वीडियोस देखो, जितना वीडियोस देखोगे ना आपको एक आइडिया आता है कि आपको किस वे में कोडिंग करनी है. आपका क्लाइंट किस वे में दे आर एक्सपेक्टिंग दैट प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड इन मार्केट. आपको एक ना जिस्ट आ जाता है, आई वुड से. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट एनी न्यू प्रोजेक्ट, जो क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है मार्केट में, आई यूज टू गो थ्रू देयर वेबसाइट्स, आई यूज टू गो थ्रू द वीडियोस एंड लर्न स्टफ फ्रॉम इट. सो आप जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो ना, आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ इसका आउटपुट ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, दिस इज व्हाट द क्लाइंट वांट्स. तो आप एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से भी और एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी आपको एक आइडिया आ जाती है. So don't just stick to the technical aspect. Don't just get into the if else condition, when clause, evaluate सब. ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके पहले थोड़ा फंक्शनल एस्पेक्ट भी देखो कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डिलीवर्ड. आपका एंड प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, पहले वो विजुअलाइज करो. उसके बाद आई थिंक डेवलपमेंट बिकम्स अ बिट इजी पार्ट, आई वुड से, जब आप विजुअलाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है. So that is what I followed in my life. That is what I learned from my seniors. So that helped me a lot in my career, I would say, until now. In fact, this is not just for the coding part. ये चीज तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट्स से इफ एनीवन इज देयर एंड उसको इंश्योरेंस में काम करना है या डेवलपमेंट में काम करना है, पर उसको समझ में नहीं आ रही है चीजें, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस इंटरेस्ट है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टार्ट किस तरह से करे. अगर आप डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बोलो तो स्टार्ट विद द फंक्शनल पार्ट ऑलवेज, आई वुड से. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ते हो ना, एक फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग लो, फंक्शनल नॉलेज लो सिस्टम की, कि भाई ये मुझे सपोज मुझे कोई डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करना है, वो डिस्काउंट क्यों है, कैसा लग सकता है, क्यों लगना चाहिए, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है जो आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स में दिखते हैं. उसका ट्राई मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट. आगे का आपको इजी होना स्टार्ट हो जाता है. आई ऑलवेज सेड दैट डेवलपमेंट कोड करना इज नॉट दैट बिग अ डील अगर आपका रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कैसे क्या करना है. सो स्टार्ट विथ द फंक्शनल पार्ट ऑफ इट. उसके बाद करंटली आपका प्रोडक्शन में अभी वो कोड कैसे चलता है, अगर आपका एनहांसमेंट है तो करंटली वो कोड कैसा चल रहा है प्रोडक्शन में, पहले वो देखो. करंट फंक्शनैलिटी समझो कि हाँ भाई ऐसा चल रहा है, इसको अभी ऐसा करना है, तो इट विल मेक मोर सेंस कि हाँ भाई इसको ऐसा क्यों करना है. मे बी इट इज इम्पैक्टिंग फिनेंशियल्स, मे बी थोड़ा कस्टमर अट्रैक्शन और बढ़ाना है, तो आपको एक आइडिया आ जाता है. थर्ड इज गो थ्रू द करंट सेट ऑफ कोड. अगर आपका एनहांसमेंट, एज आई सेड, अगर आपका एनहांसमेंट प्रोजेक्ट है, ट्राई गेटिंग इनटू दैट पीस ऑफ कोड. हाँ भाई यहाँ पे चेंजेस लग सकते हैं. आपका डीबगिंग उतना अच्छा होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे जाके मुझे डीबग करना है. उसके बाद देन यू स्टार्ट योर कोडिंग पार्ट.
वैसे एक SDLC साइकिल हम फॉलो करते हैं. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ ही सब कुछ स्टार्ट होता है. यू डू नॉट डायरेक्टली गेट इनटू द कोडिंग पार्ट. सो आपका रिक्वायरमेंट जो है उसको एनालाइज करो, करंट फंक्शनैलिटी कैसी चल रही है वो समझो, गेट इनटू द डीबगिंग मोड, डीबग करो कि करंट फंक्शनैलिटी टेक्निकली कैसा चल रहा है. फिर आपने फंक्शनली समझ लिया ना, अभी टेक्निकल में जाओ, फिर डीबग करो कैसे हो चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पीस ऑफ कोड ओवर इट. It becomes quite easier when you start coding, when you have gone through all this process. That is what my experience tells me. Okay, great. एंड अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है तो भाई आई वुड सजेस्ट कि वीडियोस देखो, वेबसाइट्स पे जाओ, अगर वो ज्यादा एंगेजिंग रहता है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. इंस्टेड ऑफ जस्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आती है उससे गो थ्रू करना. आई नो इट इज काइंड ऑफ टायरिंग, बोरिंग. वीडियोस वगैरह देखना, वेबसाइट्स में जाके सर्च करना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है आजकल की जनरेशन के लिए. सो आई थिंक दैट विल हेल्प एवरीवन अलॉट. अगर मैं काम की बात करूं, लाइक यू स्टार्टेड एज एसोसिएट, फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तो आप कोडिंग में ज्यादा आप ज्यादा इन्वॉल्व हुए, एंड नाउ यू आर अ टीम लीड. तो माय क्वेश्चन इज मोर लाइक कि अगर मैं डिफरेंस करूं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो बंदा कोडिंग कर रहा है उसका फ्यूचर आगे किस तरह का होता है, लाइक से कि उसे किस तरह के आगे काम मिलना शुरू हो जाते हैं, और उसको मैं अगर दूसरी तरह से पूछूं तो कि आप अभी किस तरह का काम कर रहे हो, and what you're expecting in your future, and how is this different from your starting phase like an associate? ह्यूज डिफरेंस. आप जब इनिशियल डेज में रहते हो यार, या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर रहते हो, आपका कोडिंग बहुत ज्यादा होता है. आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आपका कोडिंग बहुत ज्यादा होता है तब. योर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज टू डिलीवर योर प्रोडक्ट विद इन दी डेडिकेटेड टाइमलाइंस. जैसे जैसे आप ग्रो करते हो इंडस्ट्री में, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, यू आई थिंक यू गेट मोर इनटू द मैनेजमेंट पार्ट, मैनेजिंग योर टीम, कोड रिव्यूज होते हैं, गाइडिंग योर पीयर्स या एसोसिएट्स बोलो, या आपके अंडर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको गाइड करने का ज्यादा से ज्यादा आपका काम होता है. बिकॉज यू नाउ हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ the industry around you, the people around you, the expectations which are set around you. तो आपका काइंड ऑफ रोल थोड़ा मैनेजमेंट लेवल पे जाता है. तो मैनेजमेंट लेवल पे दैट डजंट मीन ओनली मैनेजिंग योर टीम, ओनली जो भी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से आते हैं, you bifurcate them, you sit with your team, go through the changes, go through the code reviews and all those process. उसमें आप ज्यादा आते हो. आप बैठ के कोडिंग करना थोड़ा कम हो जाता है. मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा खत्म हो जाता है. आई नो देयर आर मैनेजर्स हु स्टिल सिट एंड डू कोडिंग. सो मैं बहुत जनरलाइज्ड वे में बोल रही हूँ कि आपका थोड़ा मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा दिखना स्टार्ट होता है एंड थोड़ा कोडिंग स्किल्स थोड़ा बैकफुट पे जाता है. बिकॉज यू हैव people under you working for it when it comes, especially in MNCs, I would say, because MNCs में employees बहुत ज्यादा होते हैं. एक प्रोजेक्ट में ही, अब मेरा करंट प्रोजेक्ट में ही वी हैव अराउंड 140 to 50 एम्प्लॉइज, पीपल वर्किंग फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट. सो एमएनसीज का वो होता है. तो जैसे जैसे आप टीम लीड, सीनियर, जूनियर मैनेजर्स बनते हो, आपका मैनेजमेंट ज्यादा बढ़ता है एंड यू गेट पीपल वर्किंग अंडर यू. सो वही मतलब रिव्यूज ज्यादा बढ़ते हैं. मेरे प्रोजेक्ट में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको फिनेंशियल्स में भी ध्यान देना पड़ता है. इफ आई एम वर्किंग फॉर एनी फर्म, इफ आई एम डिलीवरिंग एनी प्रोजेक्ट, मुझे उसमें से कितना पैसा आ रहा है, इट मैटर्स अ लॉट, फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट मनी. सो how are the financials working when it comes to monthly deliverables? That is also something which we need to look into. मैं क्लाइंट को काम तो करके दे रही हूँ, बट क्या उसका मुझे रिटर्न्स में कितना अच्छा मिल रहा है, क्या मिल रहा है रिटर्न्स में, क्या हमारा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके हिसाब से मुझे रिटर्न्स मिल भी रहे हैं या नहीं रहे, और एम आई इन लॉस. ये सारा चीजें भी ना, यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स एज वेल. I would say I'm not completely sure how it works in startup because I have zero experience of in it, so I won't like to comment on it. But in MNCs, yes, these things also matter. Financials also matter a lot. So you create reports, weekly reports, monthly reports. You analyze
दी डिलीवरेबल्स, आपको एक डिलीवरेबल के पीछे कितना पैसा आ रहा है, मंथली उसका कितना कॉस्टिंग हो रहा है, कितना एक्सपेक्टेशंस था, टू स्टार्ट लुकिंग इनटू दोज एस्पेक्ट्स एज वेल. तो ये एक एड अप आ जाता है व्हेन यू गेट इनटू हायर पोजीशंस. Great. Okay, so you said कि कोडिंग थोड़ी कम हो जाती है, so let's talk about the problem, क्योंकि आपने कहा कि शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. So let's talk about the problem you faced while doing coding in when you were a new joinee, or this time, not just this time, let's say when you were doing hardcore coding, तब और अब when you are a team lead. डेफिनेटली इनिशियल मतलब जो अपना डेवलपमेंट का नॉलेज रहता है इनिशियल डेज में वो बहुत कम रहता है. विद एक्सपीरियंस यू लर्न स्टफ. सो इफ आई एम स्टक एनीवेयर, जैसे कि अगर मैं किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट कर रही हूँ, एंड मुझे लॉजिक के लिए भी डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं. जितना इजियर आपका, जितना जितना कम लाइंस ऑफ कोड में आप जितना ज्यादा डिलीवरेबल अच्छा दे सकते हो, it matters a lot. Instead of writing multiple nested if else, से better अगर मेरा evaluate में ही वो काम हो रहा है तो why not it. तो उसके लिए आप थोड़ा सीनियर्स का हेल्प लेते हो, that is this the right way, is this the right approach. अगर इस अप्रोच में मैं अगर कहीं स्टक हूँ, then you reach out to your superiors to help you out there. So मतलब मैं जब प्रॉपर डेवलपमेंट में थी, दैट इज वेयर आई यूज्ड टू रीच आउट माय सीनियर्स टू. अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं समझ रही है तो मुझे उसके लिए अगर क्लैरिफिकेशन लगता है तो आई यूज्ड टू रीच आउट टू माय सीनियर्स टू clarify the requirement for me. If even if my seniors were not able to get a response, then we used to reach out to client कि this is your requirement, but can you please like break it down into small requirements so that we can understand it and develop it accordingly. तो वो सारे माइनर हिंड्रेंसेस होते हैं विच यू फेस. कभी कभी यू गेट स्टक अ लॉट, तो नाइट्स भी मारे कभी कभी, बट इट इज ऑल अ होलसम एक्सपीरियंस आई वुड से. तो आने चाहिए ऐसे एक्सपीरियंस, बटरफ्लाईज आने चाहिए, थोड़ा टेंशन भी आना चाहिए, तो वैसे ही हम सीखते हैं. तो हाँ, बट आई थिंक आई वॉज अगेन आई वुड से आई वॉज ब्लेस्ड टू गेट गुड सुपीरियर्स हु हेल्प मी. अगर मैं कहीं स्टक होती हूँ कोडिंग में, या मेरे अगर मुझे बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रिजॉल्व द एरर्स, देन with their experience they might have faced those errors and they know a way out of it. So it's always good to reach out to your superiors whenever you're stuck. Try yourself as well, but एक वो सुपीरियर का जो ये रहता है, उनको शॉर्टकट्स भी काफी पता रहता है. लर्न अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स फ्रॉम माय सुपीरियर्स आई वुड से, जो मुझे नहीं पता थे. तो विद दैट मेरा स्पीड भी काफी बढ़ा. तो ये सारी चीजें I learned a lot when I was into development. Okay, so Pallavi, आपको इतना टाइम हो गया है MNC में, so what anyone can expect the kind of work in MNC they will get, like मान लीजिए उन्होंने अभी ज्वाइन किया और उनको किस तरह का काम मिलेगा, especially in the service based MNC like Accenture and other. So basically yeah, mostly I would say जो consulting based होते हैं, it's like आप प्रोडक्ट बनाते हो and you like what do you say, sell it to your client. So basically आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं, बेसिकली आपको सेल करते हो, दैट इज योर कंसल्टिंग जॉब. सो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लाइक आपके सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो यू गेट इनटू हार्डकोर सपोर्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे what do you say, for you need to support the system completely. कोई अगर डिफेक्ट आता है, कोई इंसिडेंट्स आते हैं, अगर कुछ सर्वर इश्यूज है and all those stuff, so that is basically your support projects. Then your enhancement project, जहाँ पे आपका बेस ऑलरेडी सेटअप है, you need to enhance the functionality. And एक है कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप स्क्रैच से कोडिंग स्टार्ट करते हो. सो बेसिकली ऐसे टाइप के होते हैं प्रोजेक्ट्स इन एमएनसी. सो इट डिपेंड्स आप कौन से प्रोजेक्ट में जा रहे हो, and that decides your route ahead, I would say. जो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इतना डेवलपमेंट इतना हार्डकोर नहीं होता. इट इज मोर अबाउट गेटिंग टू नो दी ओवरऑल सिस्टम and its servers and all those stuff. Hardcore development as such नहीं होता. Enhancement में दोनों होता है.
बट जो प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहता है इट इज हार्ड कोर कोडिंग, आपका बेसिक नॉलेज इतना ज्यादा अच्छा होता है उसमें. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू ट्राई टू गेट इनटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मोर, इधर डेवलपमेंट और एनहांसमेंट. सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, बिकॉज कहीं ना कहीं वो शिफ्ट्स का भी क्राइटेरिया आ जाता है उसमें. सो दैट दोज आर फ्यू थिंग्स विच वी कीप इन माइंड. बट अगेन ऐसा नहीं कि कहीं पे सीखने नहीं मिलता है, जहाँ पे भी जाते हो कहीं ना कहीं यू गेट टू लर्न अ लॉट, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है. बट इट इज कम्प्लीटली अप टू यू विच पाथ यू नीड टू चूज. Okay. अगर इसको थोड़ा और फॉरवर्ड करें तो what one should keep in mind before entering this field or joining any MNCs? You before joining any MNCs, you need to keep in your mind that you always have to be on your toes when it comes to getting your work done. आई नो ऐसा एक नोशन होता है कि भाई कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं, लॉट में बस स्टूडेंट्स को लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं एंड यू स्टार्ट वर्किंग. It is there, I'm not saying it is not there, I'm not in denial, but एक certain time limit के बाद it is completely up to you how you perform. If you do not perform, you are out of the race completely. आप अगर थोड़ा भी below average जाते हो, I don't think there is much scope for you. Always keep learning, always get into new technologies. आप किसी एक स्किल में रह के पूरा आईटी का आपका लाइफ नहीं निकाल सकते. यू ऑलवेज नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. सो that is what you need to keep in your mind before getting into any of the not only MNC IT sector itself. You should have that hunger of learning new things, uh, understanding that you will be getting into difficult situations. You are going to आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल लाइफ भी आ ही जाता है उसके साथ. सी इट इज गोइंग टू पे यू गुड हेफ्टी अमाउंट, फ्रैंकली स्पीकिंग. तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी कभी ना कभी आता है एंड स्टार्ट ट्राई टू डील विद इट. ऐसा नहीं है कि प्रेशर आता है तो सब छोड़ के बैठ जाओ. एंजॉय दैट प्रेशर. आप अगर वो प्रेशर एंजॉय करोगे, योर वर्क यू एंजॉय दैट होल फेज. आपका जब वो फेज खत्म हो जाता है ना, आप जब रिलैक्स होते हो, यू फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ की आई मैनेज टू गेट थ्रू ऑल दिस प्रेशर एंड आई केम आउट सक्सेसफुल. तो वो सारे आपको जर्नी भी आपको करने मिलेगी. सो आई थिंक इट इज ऑल ग्रेट. लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू एमएनसीज, not MNC, sorry, IT sector, always give it a shot. It is worth every penny. तो अगर आपको किसी को गाइड करना, लाइक लेट्स से वो भी कॉलेज में या स्कूल में है और इन फ्यूचर दे वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, so what will you suggest from where to start? What mistake they can avoid? वो क्या कर सकते हैं अपने आप में बेस्ट होने के लिए? फोकस कहाँ होना चाहिए कि वो इस फील्ड से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए? In an IT और कंप्यूटर साइंस, बेसिकली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होते हो तो आपका ऑलरेडी वो बेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है. जब आप अराउंड थर्ड ईयर में आते हो, आप ना एक अपना एक डायरेक्शन सेट कर दो कि भाई मुझे इस फील्ड में मे बी आगे जाना है. व्हाट ऑल लैंग्वेजेस आर करंटली बूमिंग इन दिस फील्ड. कोई अगर टेक्नोलॉजी है, कौन से लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो. आप अपने कॉलेज डेज में ही थोड़ा सा लैंग्वेजेस का कोर्सेज करना स्टार्ट करो. इफ नॉट, एटलीस्ट गिव सम अमाउंट ऑफ योर कॉलेज टाइम to getting into new technologies, learning new programming language. एक तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी ही चाहिए जो अभी इन व्हाट डू यू से अभी के इंडस्ट्री में अभी लाइक बूमिंग में है. तो एक तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बिफोर गेटिंग इनटू प्लेसमेंट वाला स्टफ आपको आनी ही चाहिए. जितना सर्टिफिकेशंस कर सकते हो करो, आपके कॉलेज डेज में भी करो. एक बार आपको एक फर्म ज्वाइन करते हो, most of the firms give you great opportunities to get certified in, be it any what do you say, cloud certification कोई होता है, कोई language certifications होती है, आपकी कंपनी हमेशा आपको सपोर्ट करती है. So try getting into those certifications a lot. So yeah. Okay, so talking about the facilities that MNC provide. So what is the perks of joining private sector in MNCs? Let's say in service-based MNCs, what you can tell as per your experience. Okay, first thing is you get to learn a lot. A lot means not only
the technical aspects, not only the functional aspects, but also your managerial skills improve a lot. So आपका एक कॉन्फिडेंस जो रहता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाता है व्हेन यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, फ्रैंकली स्पीकिंग. बाकी फील्ड्स में भी होता है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट यहाँ पे आपको एक क्लाइंट डीलिंग जो होती है वो आप सीखते हो, उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस आई थिंक बहुत अच्छा होता है. यू आर ऑलवेज व्हाट डू यू से in a race of reaching to like greater heights. तो आप हमेशा सीखते हो कुछ ना, आपका ब्रेन हमेशा आई थिंक हमेशा वर्किंग रहता है व्हेन यू आर इन कॉम्पिटिटिव सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है. आप अगर परफॉर्म नहीं करते हो, यू नेवर नो कि आप कब वो रेस से बाहर जा सकते हो. सो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज, बट इट इज अ गुड थिंग, आई वुड से. वो एक प्रेशर डीलिंग करना ही बहुत डिफरेंट चीज है. सो आई लाइक दैट. थर्ड इज डेफिनेटली, आप कहीं पे भी जाते हो, मनी मैटर्स अ लॉट. एंड यस, आई वुड डेफिनेटली से दैट मनी इज रियली गुड इन दिस सेक्टर. जितना आप अच्छा परफॉर्म करते हो, जितना अच्छे टेक्नोलॉजी में आप काम करते हो, उतना अच्छा ही आपके पैकेजेस होते हैं. यहाँ पे एज इफ यू परफॉर्म वेल, यू आर गोइंग टू गेट पेड वेल. यही क्राइटेरिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको पैसा भी उतना ही अच्छा मिलता है. सो these are some of the things, these are some of the perks I feel of getting into an IT sector. Okay, so talking about the positive, what is the negatives of MNC? Negatives of MNC, okay. थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस करना कभी कभी डिफिकल्ट जाता है. तो दैट इज समथिंग विच आई थिंक विच यू लर्न एज एंड व्हेन यू ग्रो इनटू दिस सेक्टर. आप सीख जाते हो एडजस्ट करना थोड़ा बहुत. इनिशियल फेज में वो डिफिकल्ट जाता है, जब भी बहुत काम होता है तब डिफिकल्ट जाता है, बट यू ग्रो आउट ऑफ इट, आई फील. स्ट्रेस होता है, यस, आई एम नॉट से कि नहीं होता. कभी ना जब आप कोई डेडलाइंस मीट करने होते हैं, वो एक प्रेशर होता है आप पे कभी ना कभी. बट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट इज यू लर्न डीलिंग विद सच प्रेशर्स. और एक बार जब आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है अच्छा खासा, वो प्रेशर फ्रैंकली स्पीकिंग इतना रहता भी नहीं है. यू नो हाउ टू गेट योर वे आउट. आई नो आई माइट साउंड लाइक मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ इस सेक्टर को, बट आई थिंक नॉट मेजर कॉन्स, आई वुड से. अगर आप में टैलेंट है, आप में अगर कुछ कर दिखाने का, व्हाट डू यू से, वो व्हाट डू यू से, कुछ कर दि हाँ, आपको अगर कुछ कर दिखाने की हंगर है, देन आई थिंक यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन दिस सेक्टर वेरी वेल. ओके, अगर इसके बाद अगर आपको कुछ बातें बतानी हो एक्सेंचर के बारे में कि किस तरह काइंड ऑफ कंपनी और किस तरह की वर्क कल्चर है एक्सेंचर में, अगर किसी को जाना हो, फिर एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एक्सेंचर, थोड़ा बहुत शॉर्ट में इफ यू कैन टेल. It is a great firm to start with. It is a great firm to work in, I would say. यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे हैं. विमेन एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे ड्राइव्स है यहाँ पे. एक्सेंचर इज वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू getting women at par with men. There is no discrimination at all. There are various drives, various initiatives to get women employee like in the picture in this sector. So that is something which is very commendable about this firm. Securities काफी अच्छी है यहाँ पे. I think even if you are working in late shifts, this firm makes sure that you have driving facilities up until your home. So that is very good. Technologies तो काफी सारी है. There are various huge clients. I need not say that since it is such a good firm. Even in pandemic situation, frankly speaking, I don't think Accenture felt that level of burn than most of the IT firms around. We never felt the heat of the pandemic and what all situations that were happening. People were losing their jobs. We didn't even get our salary cut. And I'm not saying just for my project or just because of my management, but
most of the projects in Accenture, most of the people, employees of Accenture, they did not feel the heat of the pandemic situation which was going on, which is very commendable for this firm. It did not see that much of loss uh, as compared to rest of the IT firms, I would say. So it is a very, I would say, in the consulting firms, Accenture is one of the most secure firm, I would say. Incentives काफी अच्छे होते हैं इस firm के, frankly speaking. If you do well, you're gonna get paid well. That is for sure. आपका ऐसा नहीं है कि 5% 6% है तो बस बहुत अच्छा है. If you're good, you are going to get 20 to 30% आराम से. That is something which I am saying you with the experience I have in this firm, or like in past 6.5 years. So it is a very good firm, I would say. Freshers को भी अगर start करना है, I would say don't think twice about it. Just get into it. You are going to enjoy every moment of it. And it is not only about work, it is about fun as well. बहुत सारे events Accenture organize करते हैं, right from social causes to annual fairs to office parties, everything. Fun Friday, सब होता है. So you get to enjoy a lot as well. So it is not all work. It is fun and work in Accenture, I would say. So it is a good firm. But one mistake that millennials या फिर आप मतलब in general or you as a specific person, जिससे आगे के लोग सीख सकते, like the next generation can learn from this or they can avoid in your professional journey. Okay. Frankly speaking, प्रायोरिटी दो आपके पैशन को. आप अगर पहले से ही डिसाइड कर रहे हो कि you want to get into some field, start preparing for it right from your initial days. अगर आप I mean, I had some other plans for myself, but frankly speaking, I got into something in a very haphazard manner. But I think I was blessed enough to sail through it. It might not happen with everybody. So, आप आजकल के बच्चे, दे आर वेरी स्मार्ट, आई वुड से. सो इनिशियल डेज में ही उनको पता चल जाता है कि या आई माइट गेट इनटू दिस थिंग, आई वांट टू गेट इनटू दिस थिंग. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम योर इनिशियल डेज इटसेल्फ. आपके 10th होती है, 11th 12th होती है, इंजीनियरिंग होती है या मेडिकल होता है. आप, आई वुड से 8 बचपन से ही आप सीखते तो हो ही, बट जैसे जैसे आपके बोर्ड्स नजदीक आता है ना, ट्राई रिसर्चिंग मोर, ट्राई एक्सप्लोरिंग मोर कि आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं. गेट इनटू काउंसलिंग. काउंसलिंग इज मच नीडेड. मैंने से काउंसलिंग, इट इज ऑल लाइक आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम लेते हैं, आई थिंक दैट इज अ मस्ट. वो लेना ही चाहिए. इट इज वेरी गुड. I wanted to take it. I got into counseling, but I didn't take the aptitude part of it. But I would say I think I was blessed that yeah, I got into something which secured me. But I don't want rest of the people to follow that path. So एक्सप्लोर करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको उसमें अगर आगे बढ़ना है. ट्राई वर्किंग ऑन इट फ्रॉम योर इनिशियल डेज इटसेल्फ. किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, उसके जाने से पहले काउंसलिंग लो, एप्टीज दो, थोड़ा रिसर्च करो एंड देन गेट इनटू इट. क्योंकि आप अगर आपका एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हो, देन देयर इज नो गोइंग बैक. आई नो स्विचिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन. आई एम नॉट सेइंग कि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, आई हैव फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग करने के बाद एक फोटोग्राफर बने हैं एंड सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स बने हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि दैट कैन नॉट हैपन, but choose your path wisely. That is something. You know how to tackle each situation. You know how to face the world, especially when you are in this field, because आपका people interaction, आपका social skills इतना ज़्यादा अच्छा होता है when you get into this sector. So आपका एक confidence level बहुत next level पे होता है. सच्ची में बोलो तो you know how to tackle different mindsets, different situations. आपको पता है पैनिक मोड में, पैनिक सिचुएशन पे कैसे काम करना है, कैसे काम रखना है. एंड दैट हेल्प्स नॉट इन ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ बट आल्सो पर्सनल लाइफ. सो फ्रैंकली मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा जो पैनिक मोड हमेशा ऑन रहता था बचपन से, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो क्या होता है, स्नूज बटन आ गया उस पे कि आई थिंक कितना भी टेंस सिचुएशन हो, पैनिकिंग सिचुएशन हो, आई नो how to keep my nerves intact, how I know how to keep calm and think out about it, think a way out of it.
So that is something you learn with experience in this field, because it is very what do you say, भागने वाला sector है ये. You cannot be a slow person in this sector. So you do learn all. So talking about everything ठीक है, but there is one thing that people always look after in any job, कि what kind of lifestyle they will get. Like, so if you can tell me कि इस field में, I mean MNCs in this field, किस तरह के lifestyle they will expect. So basically आपका पे अच्छा होता है, and as I said, it is directly proportional to your hard work. So आप जितना अच्छा काम करते हो उतना अच्छा पे होगा, and उतना अच्छा आपका एक लाइफ स्टाइल होगा. When I say lifestyle, हर एक का लाइफस्टाइल का डेफिनेशन डिफरेंट है, चॉइस डिफरेंट है. माई लाइफस्टाइल इज गेटिंग मोर इनटू आपका, आप इन्वेस्टमेंट में बहुत जल्दी लाइफ के बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हो. You earn good, so you start investing, you start saving at very early stage of your life. तो एक इंडिपेंडेंसी जब आती है, इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग विच इज वेरी गुड. आपको जैसा चाहिए आप रह सकते हो डेफिनेटली, बट माई लाइफस्टाइल हैज इम्प्रूव्ड इन अ वेरी गुड वे. अब अगर मुझे कुछ एसेंशियल भी लेना है, आई नो आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट इट, माय पेरेंट्स वर ऑलवेज देयर, बट अब ऐसा है कि जब खुद से कोई चीज हम लेते हैं, इट इज अ कम्प्लीटली न्यू फीलिंग. और अगर हम अपने लोगों को अगर कुछ हम कर सकते हैं, दैट इज अनदर लेवल ऑफ फीलिंग. सो वो जो एक फीलिंग आती है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग योरसेल्फ, एंड that earning, I mean say that amount is also very good. I'm not saying you're not just earning, but you are earning in a earning like in good amount, then वो feeling भी अच्छी होती है. So yeah, that is it. I mean, that is what my definition of lifestyle is. Okay, Pallavi, thank you so much for this, for your time and for this interview. So there is some part of in always in the end session, I always speak about the person whom I'm interviewing. I talk about you. So from being an introvert in school to now when you are leading a team of 13-14 people, I think your journey is inspiring, as you always try to work on yourself. In college, you tried everything possible to change your personality. That was commendable. And being a studious student is not bad at all. It's good, but you wanted to come out of that zone, so you worked on yourself on your shyness, on the low confidence that you had, and you always aim to do better in your life, which is also very good. Because result ये है जो आप आज देख रहे हो, जिसमें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, and the best quality is that you try to understand everything in detail and go deep into it. And and there's also one thing, that you never took anything for granted, which many people do. I think you never did it. आपने कभी नहीं किया, आपने हमेशा हर चीज को रिस्पेक्ट दी है, and this is your character that I found it. If please say if I'm maybe I'm मतलब हो सकता है मैंने इसमें कुछ मिस किया हो, लेकिन I think this is what I got in this session. You are hardworking, you are sincere, you respect towards seniors, you have respect toward time, you respect your work and your relations, and the best part is your selflessness, and that you have no ego in your work, or I think I'm sure in your relationship. But yes, you are egoless person, jitna main dekh sakti hu, because this is the reason that you have respect for everything that you have in your life. So this is the reason are in a good position in such a short span of time, because you just joined in 2015 and in 2021 you are team lead. I'm not saying ki this is not doable and kisi aur ne nahi kiya hoga, but still in this hardcore competitive field, I think you have done it very beautifully, and it's not just a position, it's also the knowledge that you have gained in this short span of time. It's very important to have a good knowledge in any specific in one domain. It's commendable. So I think the takeaway from you that anyone can learn is all your characters. And yeah, this is all from my side. If please say कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, because this is what आपने बहुत बोला. क्योंकि there is also many things I think, लेकिन हाँ, this is the main takeaway that people can take. You respect your work.
आई हैव सीन इट, और किसी किसी को भी अगर समझ में आएगा ये एपिसोड देखे तो उनको भी समझ में आ जाएगा that how much you respect your work, and of course your seniors. This is actually very good to say, because you know a lot of people do not respect their seniors, and this is their, I think ये उनकी खड़ी गलती होती है, because they think they are smart, and that is true. बहुत सारे लोग smart हो सकते हैं, but seniors are seniors for a reason, because they have experience that you don't have. So maybe you are good in technical knowledge, but though your seniors are have not just knowledge, but they have experience. And I think you understood this in very starting. That is why you have that respect for people, especially seniors. जैसे आपने कहा कि अब हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, जिसकी वजह से आप इतने आगे आ पाए, and then you trusted them also. उनको trust भी किया आपने, respect भी किया, which is very beautiful. So this is all from my side. Please say अगर मैंने कुछ भी छोड़ा हो. And yeah, thank you so much. All the Thank best. you so much. Thank you so much for having me. All the best for your future, and may you get everything in your life with your hard work. Same to you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Pallavi. Bye. अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल एवरीवन, जिसको भी आप जानते हो जो स्टेज पे है, जो अपने करियर बनाने के स्टेज पे, जो इनिशियल स्टेज पे है. एंड फॉर द रिकॉर्ड, माय नेम इज रश्मि, यू आर ऑन दिस इज इम्पेरेटिव. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.